बनाया है, हम उसमें आनंदित रहेंगे। आमीन। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज इस सुंदर दिन के लिए। और हम जानते हैं for the last 2-3 weeks से पानी बरसता है and it has been miserable, but आज जो sunny day है, just want to thank the Lord for His beautiful day. Amen. Just want to welcome you all in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक को स्वागत करते हैं। And those that are online watching us, we just want to welcome you all in Jesus' name. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे साथ है और इस सभा में भाग ले रहे हैं। Amen. Hallelujah. क्यों नहीं हम प्रार्थना करें इसमें? Heavenly Father, we just bow before your presence once again this afternoon, oh God Almighty. We just want to thank you for your loving and mercy, Lord. We thank you for this day that you have given us, Lord, that we can gather here, Lord, to worship you, Lord. Father, I pray for your Holy Spirit to minister to us, Lord, this afternoon, Lord, as we come into your presence, Lord, as we bow before your presence, Lord. Help us to worship you in spirit and in truth, oh God Almighty. Father, we thank you for loving us so much, oh God Almighty. Thank you for making provisions for us. Thank you, Father. In Jesus' name I pray, Lord. I just commit this service into your hands right now in Jesus' name. Amen. 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 स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, यहोवा ने जो बनाया है, हम उसमें उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर को। आमेन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।
मदद न करे। तो थर्ड वर्स में कहता है यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला, हमारा प्रभु हमें विजय देने वाला। The battle belongs to the Lord, but the victory is ours. प्रभु यीशु मसीह जब हमारे साथ रहता है तो वो हमें हमारे जीवन में जीता लेकर आता है। He brings victory in our lives. No matter what we go through, He is there with us. He is there to lift us up. He is there to uphold us. जब हम डेविड के लाइफ में देखते हैं जब वो गोलायत को सामना कर रहा था, and nobody wanted to go and fight the Goliath, but David said, "I'm going to fight Goliath." Why? Because he said, "My God is with me. The living God of Israel is with me, and I will fight him, and I will have victory because the Lord is with me, and He is going to give me that victory." And I know this afternoon you may be going through some difficult situations, your Goliaths in your life, but let the Lord fight your battle. Trust Him, and you will see the blessing of the Lord in your life. Amen. Hallelujah. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। Hallelujah. जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर अपना खून बहाया मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मैं हूँ उसका मेरा न कोई सिवाय उसके, सिवाय उसके। उसने पिता से मिलाया मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है हुआ सवेरा, सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा, यीशु मेरा। इसलिए मैंने गीत गाया मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से यीशु हमारे जीवन में आया हमारा जीवन बदल गया है। आज हम
सब कह सकते हैं जब से प्रभु यीशु मसीह आए हमारा जीवन बदल गया। क्यों, कैसे बदल गया? क्योंकि हम उसकी वचन के अनुसार हम चलते हैं और उसकी आराधना करते हैं और उसकी आशीष जो है वो हमारे जीवन में आता है। आमेन, हालेलुया। तो क्यों नहीं उसकी धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। महान परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो हमारे साथ है सदा के लिए। आमीन।
Hallelujah. We worship you, God. हर घड़ी चलता रहूं तेरे साथ, हर घड़ी चलता रहूं तेरे साथ, तू ही है मेरी मंजिले, तू ही है मेरी रोशनी, तू ही है मेरी मंजिले, तू ही है मेरी रोशनी। कैसे छोड़ूं मैं तुझे, तू ही है मेरी जिंदगी। कैसे छोड़ूं मैं तुझे, तू ही है मेरी जिंदगी। मुझको सिखा मैं रहूं तेरे हाथ, हर घड़ी चलता रहूं तेरे साथ, राही मसीही ऐसी है कि उन पर चलना है कठिन। राहे मसीही ऐसी है कि उन पर चलना है कठिन। मुझको ऐसी शक्ति दो, चलता रहूं मैं रात और दिन। मुझको ऐसी शक्ति दो, चलता रहूं मैं रात दिन। केवल तेरा वचन रहे तेरे साथ, हर घड़ी चलता रहूं तेरे साथ, मुझको संभालो हे प्रभु, कभी निराश ना हो। मुझको संभालो हे प्रभु, कभी निराश ना हो। अगर निराशा आए भी, हिम्मत कभी ना छोड़ दूं। अगर निराशा आए भी, हिम्मत कभी ना छोड़ दूं। हर कदम बढ़ता रहे तेरे पास, हर घड़ी चलता रहूं तेरे साथ, हर घड़ी चलता रहूं तेरे साथ, हर घड़ी चलता रहूं तेरे साथ। हालेलुया। हर घड़ी चलता रहूं प्रभु तेरे ही साथ, तेरे साथ चलो प्रभु। आज यही हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर एक के लिए महान परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हर समय हम तेरे साथ चलते रहे प्रभु। यही हमारा प्रार्थना है आज।
हालेलुया, क्योंकि तू अपने बाहों में हमें लेकर संभालता है प्रभु। हालेलुया, वी वर्शिप यू जीसस। Oh, we worship you, Lord. Thank you, Jesus. तू बाहों में संभालता मुझे, अनंत दिन मैं देखता तुझे। तेरे
Hallelujah, Jesus. We worship you, God Almighty. तेरी ही आराधना हो प्रभु, तेरी ही प्रशंसा हो प्रभु. आज हम धन्यवाद देते हर एक के लिए, हर चीज के लिए जो तुम्हारे जीवन में किया है प्रभु. धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से. Hallelujah. Father, I pray for those that need healing, oh God Almighty. I pray that you will touch them even right now, Lord, as they worship you, Lord, as they stand before you, Lord, in your presence, oh God Almighty. In Jesus' name, in Jesus' name. Be with them, oh God Almighty. Be with them, Lord. In Jesus' name I pray, Lord. In Jesus' name, hallelujah. You are worthy, O God Almighty. You are worthy, O God. You are worthy, O Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give you all the glory and honor. In Jesus' name I pray, Lord. Amen. 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 You may be seated. Hallelujah. Hallelujah. हर एक को स्वागत करते हैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से. Especially those that are online watching us and taking part in this service, and I know the presence of the Lord is with you. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, for this beautiful day. कितने लोग आज खुश है कि आज ऐसा दिन मिला हम लोग के, and to be found in the house of the Lord. Amen. Hallelujah. कितने लोग, I know they have gone for a drive and whatever, but आज का दिन है जो हम परमेश्वर की जय जयकार करते हैं. स्पेशल डे है, right? There is every day that we praise and worship God, but today is a special day. Amen. Hallelujah. आज हम लोग की एक स्पेशल टेस्टमनी है, and this is what the Lord had put in my heart. तो ये बहन से मैंने बातचीत किया, and she said yes, she will do it when she is ready. And I got the message that she is ready, and आज वो हमें अपना testimony देगी. So let's welcome her. Praise the Lord. Amen. I just want to thank the Lord that I know Him, how I came to know Him. So this is how I started. When my son was very young, like Preston, a little bit older than him, I would say 13 or 14 months old, he was crying a lot. All night he would cry so much that I got so tired of him. Like nighttime I'll be awake most of the time, and the daytime I'll be going to work. So this thing continued for a long time. So one day I met one of my friends. She was a Muslim. So she asked me, how am I doing? So I said, I'm good, but my son is crying a lot. He's crying so much that I'm having sleepless nights. So she told me, don't worry. So she told me to go and meet his father-in-law. So his father, he was working in the market, in the Nandi market. I used to work in Nandi, Fiji Islands at that time. So I went to him and I told him this is what is going on with my son. So he told me to give him some money. So I gave him. So I had to wait for about a week. So he told me that he will give me some tabij. Tabij means dora and some. So he could give it to me and I'll put it on my son. If he wears it, he will stop crying. So I got really happy to hear that. So I believed him that this thing will help my son. So when after waiting for about a week, he gave it to me. I was so excited. I took it, and on that day I was so happy that when I put this tabij around my son, he will stop crying. So I just went home that day and put it around, like made my son wear it. So I was carrying him, and as soon as I put him around his neck, he just went down on the ground
and start rolling as if he was like, if you put the fish from the aquarium or fish on the ground, he was crying and rolling like that. And I got so scared. And I started crying with him too. So I got so upset. I got so upset that I cut the Dora and threw it away. And then this thing continued. But when I cut the Dora, it was not like the way he was doing on the ground, but he was still crying. So I lost faith in that Muslim thing. So what I did, somebody told me to go to the Nandi temple. So I start going to the Nandi temple. I will sacrifice all those fruits and money, go around each and every temple so many times, and I would go almost every day after work. And this thing continued for a long time, so more than a month. I have to go to the temple almost every day, and I got tired of going and doing all these things. And this thing never worked. It did not work at all. So I lost faith in this now. So after some time, I was just like so desperate. I would meet people and say that this thing is going on with my son. What do I do? And somebody told me to go to the now another mandir, and then like he started getting boils now over his head. So one boil, you know how painful it is. Nobody can imagine the pain. If one boil comes, it takes time for it to get big. Now from one boil to another, so many boils had come up all over his head, and I can't stand the pain. And now he started crying daytime and night both. Sometimes I have to leave my work and come to see why he was crying daytime as well. So when I went to the mandir, they gave me some ashes and some turmeric. Ashes to put on his forehead and turmeric for him to shower him with no soap, just mixed with cold water from head to toe for 7 days. And now he got more sick. Now he started having fever. Now from crying and fever, after that, like so many boils all over his head. You can't imagine the pain. And then there was pus and blood when he wakes up in the morning. So I left the temple. I lost faith in the idol worship and all those things. I lost. And then I thought, I just started going to the hospital. I took him there. And then they gave him antibiotics. And then every other day with the antibiotics, they will give him injections. And this thing would not heal him. Still the same thing is going on and on. So one day when I was coming home, when a taxi driver was giving me a ride on my way home, so he also asked me how was I doing. So I tell the story basically to everyone whom I met. So he told me, don't worry, he will tell his pastor. He will tell his pastor. So he gave my address to the pastor. The pastor comes in, and I met that pastor, Pastor Sam. He comes to my house, and he told us just to believe, have faith, that when he prays, my son will get healed. So we believed, and we have faith in the Lord that my son will get healed. We were ready to do anything at that time. So when he prayed, he stopped crying. He stopped crying, and the boils disappeared as if nothing happened. So there was a miracle. There was a miracle. And then we got so happy, as if nothing happens. Now nobody would believe that he was
in pus and blood and crying. The crying stopped. So there was the miracle. So now the lesson I learned from there. Anybody is going through any of the problem in their life, also try to believe in the Lord, who is alive. We should try like not put our faith in the idols and all these things. I believe that I wasted my time doing all this, and now, so because our Lord is a living God, He is alive. He has eyes to see, ears to hear, and above all, He is alive. So there is a miracle. This is the biggest testimony, my first testimony, that how I came to know Jesus. Thank you. Hallelujah. We thank God for this beautiful testimony, and those that, like it reminds me of something else. Remember this widow, this woman. She had the issue of blood. उसके खून की बीमारी था, वो खून बंद नहीं होता था, and she went from place to place, from people to people, and she spent all her wealth, all her money, everything in order to receive that healing. But finally, she came to Jesus. When she came to know that Jesus was passing by, she made a point in her mind. She made up. She said, "I am going to touch the hem of his garment, and I know I'm going to be healed." Guess what? She acted upon her faith. She did what she had thought of doing, and finally, she received that healing. She received that healing, and Jesus actually turned around and says, "Somebody touched me." It was a big crowd. So now the disciples turned around and said, "No, Lord, look around you. Know, there's so many people here. Anybody could have touched you." Jesus, "No, there is a particular person that has touched me." And I felt the power going out from me into her. And I know for sure when our sister touched the Lord, when she came to the Lord in faith, when this pastor came in and he prayed for this family, his son got healed. And I've seen the son, he's a grown-up man now, and the Lord is keeping this family together. And I've seen this sister's faithfulness. Every Sunday she is in church worshiping God, no matter what happens. But there are times when she has to work, it's a different story. But she is always there, she's faithful. And this is what the Lord had put in my heart. She has a testimony that she needs to share. So I spoke to her, and she says, "Yes, I will share this, my testimony." I didn't tell her what to share or what not. I said, "What the Lord put in your heart, share. Give it out." Because I know the Lord is speaking to other people out there, that through her testimony, that God can touch you too. If He can do it for her, He can do it for you too. Amen? Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस testimony के लिए. And that pastor was Pastor Samuel Modliar, and he's a very great friend of mine. And we started in the ministry probably like almost the same time. And he's a great minister of God. Amen? Great servant of God. So इस समय हम वचन सुनेंगे, और आज के प्रचारक भाई Ezekiel है. Let's welcome him. Hallelujah. आज परमेश्वर के धन्यवाद देना चाहता है एक और मौका जिसे निकाली से कि हम लोग मिल के परमेश्वर के महिमा सकता करें, इसके जय जयकार करे सकता और उसके बारे में कुछ सीखे सकता। और सबसे पहले सबके फिर से एक रिमाइंडर देना चाहता है कि जैसे अक्टूबर एक जून महीना है, पास्टर्स अप्रिशिएशन महीना है, तो हम लोग पास्टर्स लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे और उन लोग के याद करते रहे। जैसे आज लास्ट डे है अक्टूबर के, तो आज हम लोग अपन जो वचन में जाएगा, जैसे आज अक्टूबर 31 है और हम लोग जनता है आज हेलोवीन है।
तो हम हेलोइन पे कुछ प्रचार करेगा और सबके बताना चाहता है कि हेलोइन के जो मकसद कौन सी है और कैसे शुरुआत भई से, ताकि हम लोग एक जो निर्णय है सकता है बना, वी कैन मेक अ डिसीजन फॉर आवरसेल्फ वेदर वी शुड बी सेलिब्रेटिंग और वी शुडंट बी सेलिब्रेटिंग हेलोइन। अब जैसे जनता है काफ़ी मसीह लोग भी शायद तैयारी करे हुई हेलोइन मनाए के लिए और संजा के लिए कुछ प्लान करे हुई। तो हम आज खाली बनता है एक अवेयरनेस लेकर है कि इसके ओरिजिनेशन कौन सी है, बिकॉज काफ़ी जन जो सेलिब्रेट करे हैं दे डोंट इवन नो व्हाट हेलोइन इज ऑल अबाउट। फॉर देम इट्स जस्ट ड्रेसिंग अप, carving the pumpkins and going out trick-or-treating. But we have to know what the actual meaning is so that we can make a good decision whether we as believers should be taking part in this or not. और हम लोग सकता है अपन लड़कन के भी बताए और हम लोग सकता है अपन जो फैमिली है वो लोग के भी बताए कि इसके जो असली मकसद कौन सी है। सो हेलोइन जो है उसके शुरुआत एक जो ग्रुप ऑफ पीपल रहा जो सेल्टिक्स रहा, that's what they were known as. So they were a group of people who started this celebration. और जो समय शुरुआत भई रहा, they didn't have 4 seasons, they just had 2 seasons basically. So summer, जैसे summer end हुए विंटर वहाँ से शुरू हो जाए। जैसे अभी हम लोग 4 सीजन सेलिब्रेट करता है, तो समर आवे है, फिर उसके बाद फॉल आवे है और फॉल के बाद तब विंटर आवे। सो फॉल इज मोर लाइक अ ट्रांजिशन सीजन फ्रॉम समर टू विंटर। लेकिन उस समय दे डिडंट हैव फॉल, सो अक्टूबर लाइक मिड अक्टूबर एंड अक्टूबर ले उससे पहले समर रहता रहा और फिर वहाँ से ट्रांजिशन हुए के सेम टाइम फॉल विंटर चल दे। So summer was considered the season of light. जिसे हम लोग जनता समय में ढेर घाम निकले, ढेर अंजोर रहे, so it was considered a season of light. और विंटर जो सीजन रहा, हम लोग जनता विंटर में ढेर अंधियार रहे, 3-4 बजे संजा के अंधियार हो जाए और फिर सवेरे काम पे जब हम लोग जाता तो भी अंधियारे रहे। तो it was considered a season of darkness. तो जन टाइम अक्टूबर 31 के जन टाइम ट्रांजिशन होता रहा फ्रॉम समर टू विंटर, द सेल्टिक्स पीपल ऑफ सेल्टिक्स दे बिलीव कि एक रात है जो अंजोर से अंधियार हुए है एंड बेसिकली जो मर गई से और हम लोग जो जीवित है जो रास्ता है बिटवीन द डेड एंड द अलाइव, इट बेसिकली बिकम्स फेडेड, कि उसमें से जो दरवाजा है थोड़ा कमज़ोर पड़ जाए। दिस इज़ देयर बिलीव, दिस इज़ नॉट ट्रू। सो उन लोगों का रहे है कि जो मर गई से वो एक रात के लिए आवे है सेल्टिक्स लोग के बीच में रहे। सो व्हाट द सेल्टिक्स डिड, दे वर स्केर्ड कि नाउ दिस डेड हु आर कमिंग फ्रॉम द डेड टू बी इन बिटवीन देम फॉर अ डे, basically I के उन लोग के crops destroy करी, they'll bring harm. So these spirits, the dead, will come and bring harm to these Celtics. तो उन लोग कौन सी करे? They dressed up in a way to show this dead that they were one of them. तो जब हम लोग we dress up for this Halloween, basically the origin was that they were dressing up so that they could tell these evil spirits that were supposed to be coming from the dead that I am one of you. हम लोग अभी भी dress up करता है. It represents the same thing. We are telling the spirits, the unclean spirit, that I am one of you. So that is where it originated from, and it was driven out of fear. The Celtics were afraid. They were afraid that if they don't dress up like this evil spirit, if they don't tell these evil spirits that they were one of them, then they would be harmed.
basically their crops would be destroyed. They will have like physical harm as well. So the Celtics on that night, they would look just open fire out time banatra. So they would turn off this open fire just to signal the spirits that okay, I'm one of you. You can come and talk to me. और फिर कौन सी वो लोग करत रहा जब आए के वो लोग से बातचीत करत रहा so they would consult like things like future predictions and stuff. So that's how all those things happen. They didn't realize that, of course, they were talking to some spirit, but it was not the dead, because हम लोग के धर्मशास्त्र बतावे है कि once we die, once our body leaves this, once our spirit leaves the body dies, it returns back to the soil, and our spirit, it goes to be with God. So it goes to either heaven or it goes to hell, depending on how we are. So it wasn't the dead that were coming back to the Celtics, but Celtics were talking to some body. They were talking to some spirit, because the spirits were talking to them. Now who were they talking to? They were talking to Satan, who disguised himself to look like their family and friends who were dead. And this is something that the devil continues to do. So that brings me to my main topic today, कि the enemy disguises himself. जो Satan है वो अपने आप के disguise कर ले. And sure enough, like this morning when I was going through Facebook, I saw somebody, a pastor's wife, basically posted something like, the devil doesn't come wearing red clothes that we imagine with two horns sticking out, but it disguises himself into things that we like, things that entertain us. जैसे हम लोग ईव के बारे में देखता है, तो जोन टाइम उसके डेवल जाके जोन टाइम सैटन जाके ईव के अटेम्प्ट करीस रहा, Satan didn't go as himself. It disguised himself as a snake. तो सांप बन के जाके उसके बताइस बोले कि look at that fruit. It's so nice looking. It looks good, and that is something that caught Eve. Eve वही से भड़काई गए because there was this fruit and it looked beautiful to her. It looked appealing to her. और कभी-कभी हम लोग के लाइफ में भी वही रकम रहे कि there are certain things that we shouldn't be doing. जैसे वो फल हम लोग जानता है, she wasn't supposed to be eating that fruit, but it looked appealing to her, and Satan used that against her. तो कभी-कभी हम लोग के लाइफ में भी वही रकम Satan कुछ चीज use कर ले, things that we are not supposed to take part of, but it looks appealing to us, it looks fun to us, everybody else is doing it, so might as well we do it. But the Bible tells us today that we are the light. He has given us a light. He wants us to be separated from the world. He wants our light to shine. He wants us to be blameless. He wants us to be holy. हम लोग के धर्मशास्त्र कई जगह पर बतावे ये बात कि He wants us to be holy. He wants us to be blameless. He wants us to be segregated. He wants us to be in this world but out of this world. He wants our spirit to be aligned with the Spirit of God. He wants us to walk in His ways. हम लोग कई समय बहकावा में आ जाता, things that look appealing to us, we make our own entertainment. Of course, Bible also reminds us that we need to have fun. We shouldn't take all the fun out of our life. We need to enjoy our life, but in a way that it pleases God. We can still enjoy our life, we can still have fun, we can have the same amount of entertainment, but in a way that it pleases God. Not in a way that basically brings shame to God and His name. हम लोग के जो पवित्र जो purity है वो हम लोग के life से हटे नहीं, but we can still have fun. But there are certain things that we need to segregate ourselves from. कुछ ऐसा चीज है जो हम लोग के लाइफ में
जो हम लोग अपने आप से निकालता है। हम लोग आज बाइबल में एक पोर्शन देखेगा जो हम लोग के मिले हैं बुक ऑफ लुक चैप्टर 16 वर्स 19 से 31 में मिले हैं। आई विल समराइज मोस्ट ऑफ द पार्ट बट वी विल रीड अ फ्यू ऑफ देम। तो यहाँ पर जो लुक चैप्टर 16 में मिले हैं वर्स 19 से, यहाँ पर दो जन के बारे में बताए हैं, लाजरस और एक रिच पर्सन के बारे में। तो लाजरस जो घाव से भरा रहा, वो जो रिच आदमी के घरे जावे भोजन लेके लिए, बिकॉज he had souls so he couldn't take part in the regular things that everybody else could. So basically he was very poor. तब जन टाइम हुआ पर जाए रिच जन आदमी रहे, वो देखे इसके ऊपर तरस नहीं आवे, तो जोन खाना उसके टेबल पर से गिर जावे, ये जोन गरीब आदमी रहा जोन सो से कवर रहा लाजरस, वो वही उठा के खा ले। और फिर एक ऐसा समय आया when both of them died. Lazarus goes to heaven and that rich man doesn't make it to heaven, he goes to hell. यहाँ पर हम लोग एक चीज नोट करें कि the rich man doesn't go to hell just because he's rich. He goes to hell because he lacked compassion, he lacked love in his life. Once he goes to hell, तब वो वहाँ से घूम के बताए हेवन में देखी इब्राहिम के संगे लाजरस जो गरीब आदमी रहा उसके संगे रहा, तो उसके घूम के बताए बोले आई एम थिर्स्टी, बोले हम यहाँ गर्म जगह है, हेडीज है, आई एम बेनिंग एंड आई एम थिर्स्टी, कैन यू सेंड लाजरस फ्रॉम हेवन टू बेसिकली क्वेंच माई थर्स्ट, की थोड़ा से पानी लगा के हमार जो जीभ में लगा दो ताकि हम जो प्यास से बुझ जाए। तो इब्राहिम उसके बताए बोले कि यू कांट, बेसिकली जब टाइम तुम लोग हेवन जब टाइम अर्थ पे रहा, everything was going well for you but you didn't care about Lazarus and things weren't going well for him. Now basically it's opposite. और बोले जब हेवन में है और हेल में there's a big pit in between. So heaven में से even if Lazarus wanted to help the rich man, he's not able to go on the other side because there's a separation between heaven and hell. So what I'm trying to say is when we go to heaven, we won't be able to help our relatives who are in hell because there's a pit separating the two. If we have to help somebody, the time is now. अगर हम लोग जानता है आज हम लोग के कोई जो फैमिली फ्रेंड्स है जो पाप में डूबा है, परमेश्वर से दूर है, if we want to help them, the time is now. We can't do anything once we leave it because everybody is just according to what they have done. Jonchi, like my parents did, no matter how good they are with the Lord, it doesn't help me get a free pass to heaven. Basically, I have to walk my own walk. I have to do things right if I want to make it to heaven. वही रकम Preston रही, when he grows up, it doesn't matter how Stephanie and I are. It doesn't matter how dad and mom are. He has to walk his own walk. He has to accept the Christ. He has to know what is right and what is wrong. If we don't guide him the right way and he doesn't choose what is right, we may be able to make it to heaven, but he won't. But if he does things right, if he walks in the ways of the Lord, then he will make it to heaven, whether Stephanie and I, we make it or not. So because everyone gives their own account. तो यहाँ पर हम लोग देखता है जैसे लाजरस के बारे में, फिर आगे जाके जन रिच आदमी है बताए कि हमारे पास बोले 5 भाई और घरे, बोले तुम चाहे हमें या लाजरस के भेजो कि जाके वहाँ पर उन लोग के 5 भाई लोग के वोन कर दे। तो इब्राहिम उन लोग के बताए बोले कि यू आर ऑलरेडी हियर, इवन अगर तुम लौट के जाएगा उन लोग के बताएगा, they will still not believe. There is no coming back from when you leave this earth. तो even though लाजरस मांगत रहा आए के बताए,
sorry, rich man, even though मांगत रहा है कि अपन जन 5 भाई और लोग के वोन करे, he was not able to because he has already left earth. He is not able to come back and warn his 5 brothers. Now the reason why I'm bringing this topic up is because it goes hand in hand with what the Celtics were doing. The Celtics had a belief that the dead were coming back to them, their dead relatives were coming back to them and talking to them. But when we look at this portion, when we read this portion, we know that even though this rich man, he wanted to come back from Hades just to warn his brothers, he was not able to because he has already left earth. So when these Celtics, they were talking to people, it was Satan disguising himself. वो अपने आप के वो रकम प्रेजेंट करता रहा कि they were from the dead. हम लोग के धर्मशास्त्र यहाँ पर रिमाइंड करें कि we are not able to talk to the dead. They are already gone up to be with the Lord. तो हम लोग के आज एक रिमाइंडर यहाँ पर मिले है कि जन सेल्टिक्स जन सैटन है वो अपने आप के डिस्गाइज करे, जैसे ईव के संगे डिस्गाइज करे वही रकम उन लोग के संगे करे है, और आज भी हम लोग के बहकाए के लिए डिस्गाइजेस हिमसेल्फ, जैसे हम लोग के बाइबल फॉल्स प्रोफेट्स लोगों के बारे में भी बताए कि वो लोग जिन टाइम अपन फॉल्स प्रोफेट लोग जिन टाइम अपने आप के एक मैसेज तैयार करे, when they bring out a message, they write it in such a way that it is so appealing to us, it looks so good to us. But if we don't have the right spirit, if our spirit is not in line with the spirit of God, then हम लोग जान नहीं पाएगा. जैसे सेल्टिक्स लोग रहा, वो लोग के जो आत्मा रहा परमेश्वर से जुड़ा नहीं रहा, तो जो टाइम सैटन अपने आप के डिस्गाइज करके आए कि लोग से बातचीत करे, they thought that they were talking to the dead. और वो लोग अपने आप के ड्रेसअप करके ट्राई करे प्रिटेंड करे कि they were same with these people who were coming from the dead, ताकि वो लोग से मेल मिलाप करे और लोग के कुछ हानि नहीं हुए. तो वही हम लोग के आज धर्मशास्त्र बताए कि we need to separate ourselves, we need to segregate ourselves. जैसे हम लोग के बुक ऑफ 2 Corinthians chapter 11 verse 14 में यहाँ पर बताए हैं, यहाँ पर बताए बोले जन सैटन है वो अपने आप के डिस्गाइज करके आवे, he pretends to be something else. और कौन सी प्रिटेंड करे? He knows our weakness, he knows what we love, he knows what can get us. जैसे हम लोग जीसस के टेम्पटेशन के बारे में थोड़ा दिन पहले सुना रहा, जब वो आए के फिश में जीसस के टेम्प्ट करीस, he knew Jesus was hungry, और आए के वही पे फोकस करीस कि तुम अगर परमेश्वर के पुत्र है तो हुक्म दो कि ये जो पत्थर है रोटी बन जाए. He focused on the weakness first. वही रकम आज हम लोग के लाइफ में भी है कि he focuses on our weakness. He knows what we are going through. He knows our weak point. And if we are not connected to God, हम लोग जैसे परमेश्वर से थोड़ा दूर होता है, he is able to take advantage. He is able to intervene and mislead us. हम लोग एक और एक घटना देखता है जो मिले हम लोग के बुक ऑफ 2 Samuel चैप्टर 12 में मिले, बट हम लोग खाली वर्स 23 में यहाँ पर देखिएगा, एंड आई विल समराइज द रेस्ट. यहाँ पर अगर हम लोग हिस्ट्री में जाता है तो डेविड के जो लड़का रहा, he was very sick. और जनता डेविड was king, he was a man next to God's heart. So David held a fast. He stopped eating. He was praying for his son to basically get healed. But एक हफ्ता बाद, as God had told him before, एक हफ्ता बाद उसके जो लड़का रहा, he passed away. So David got up, he went and he ate. तो उसके जो नौकर लोग रहा आए के उससे पूछिस, बोले जब एक हफ्ता बीमार रहा, बोले तुम कुछ खाया पिया नहीं, बोले अब वो मर गए, बोले कैसे तुम सकता उठ के जाके खा ले. तो डेविड उसके घूम के बताइस, बोले what help would it do to me if because he's already dead. अगर हम नहीं खाएगा, I can't bring him back to life again. He's already dead, he's already gone. I can't bring him back to life again. The only thing that can happen is if I
walk in the ways of, if I have my path right, I can go and meet him. तो यहाँ पर डेविड हम लोग के जो क्लियरली बतावे है कि बोले जब एक पेशेंट जब मर जाए he doesn't come back. We go to them depending on how our lives are. And of course, like उसका लड़का heaven goes and he goes to hell, then they are not able to meet again. तो यहाँ पर हम लोग के फिर से एक रिमाइंडर दे कि we don't talk to the dead. We are the living. We separate ourselves. जन मर गई से they don't worship God. यहाँ पर हम लोग का धर्मशास्त्र शांस में बताए is the living that worship God, is the living that praises God. जिसे हम लोग spiritually alive है, we are physically alive, spiritually alive. We are the ones who are praising God, and we should continue to praise God. 2 Timothy chapter 1 verse 7 में यहाँ पर बताए God has not given a spirit of fear. जिसे हम लोग सेल्टिक्स लोन के देखता रहा, they invited the spirits, they invited the evil spirits so that they can be part of them, they can be in union with them, ताकि वो लोग के जो evil spirits है आए के हानि नहीं पहुंचाए. But God has given us a spirit. He has given us a spirit not of fear, but of power and of love. तो अगर आज हम लोग के लाइफ में कुछ अगर रोंग जावे है, कभी कभी हम लोग के टेम्पटेशंस आवे है कि we use the wrong path to basically get our ways. लेकिन यहाँ पर बतावे है कि जब परमेश्वर हम लोग के एक आत्मा दे है, it's of power, it's of love, it's not of fear. जब हम लोग परमेश्वर के आत्मा से भरा रहता है, हम लोग के अगल बगल में कुछ भी चले, चाहे प्रॉब्लम चले, चाहे कुछ सिचुएशन चले, हम लोग घबराता नहीं है, बिकॉज हम लोग जनता है कि परमेश्वर हम लोग के साथ है. और वही चीज़ हम लोग के जैसे शाम्स में भी बतावे है कि बोले when you walk thousands may fall on the left and 10,000 on the right, but God will protect you. तो हम लोग जनता है कि चाहे कुछ भी हुए, परमेश्वर हम लोग के प्रोटेक्ट करके रखे. और हम लोग जैसे बुक ऑफ इफिशियंस देखता है, बुक ऑफ इफिशियंस हम लोग के चैप्टर 5 वर्स 8 से 11 में यहाँ पर बतावे है कि बोले वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. परमेश्वर हम लोग के एक बत्ती के समान चुनी से, एंड ही वांट्स अस टू बी holy, he wants us to be blameless, he wants us to be separated, he wants us to shine, he wants us to shine the light of God on everybody else. हम लोग के अलग बनाई से, we are the chosen one. हम लोग जन वर्ल्डली के काम है, हम लोग उसमें से अपने आप के सेपरेट करके हम लोग जन परमेश्वर के आत्मा है, हम लोग उसके ऊपर उठाता अपन जिंदगी में. जब हम लोग परमेश्वर के आत्मा के ऊपर उठाता है, that's when we are able to shine. हम लोग अपन ओन ताकत से हम लोग नहीं सकता शाइन करें. We have to have the power of God with us. We have to have the Spirit of God with us so that we are able to shine. तो आज हम छोटा से वचन से यही बनता है शेयर करें कि let us separate ourselves, let us segregate ourselves from the things of the world, let us segregate ourselves from the evil one, from Satan. जब वो हम लोग अपने आप के डिस्गाइज करके आवे और हम लोग के बहका के कोशिश करे, we need to be filled with the Spirit of God to be able to differentiate. हम लोग जब परमेश्वर के आत्मा से भरा रहता है, we are able to differentiate what is from God and what is not from God. तो आज सबके फिर से वही रिमाइंडर देता है कि whenever we do something, always ask God for His guidance. Always ask God to show you if it is right or if it is wrong. अगर हम लोग God के guidance नहीं लेता है अपन लाइफ में, we think that we are doing things right. We think that there are certain things happening, but it's actually something else. Spiritually, it's something else going on. जैसे हम लोग सेल्टिक्स लोन के देखता है, they were all this while they were talking to Satan,
who disguised himself as the dead, and they thought that they were talking to their dead relatives. तो अगर वो लोग परमेश्वर के आत्मा से भरा रहता, they would have been able to identify that. वही रकम अगर हम लोग परमेश्वर के आत्मा से भरा रहता है, we are able to differentiate ourselves what God wants from us and what is not from God. हम लोग सोशल मीडिया पे जाके जब पढ़ता है things that are posted by prophets and false prophets, we will be able to differentiate what is correct and what is not, because our spirit is in line with the Spirit of God. आज सबके फिर से रिमाइंडर देना चाहता है कि this is the end days. We will see a lot of things. We will see a lot of false prophecies. हम लोग के फर्ज बने हैं कि we need to spend time with God so that we are able to differentiate what is coming from God and what God wants from us. तो आज ये हम लोग के बीच में छोड़ेगा और रिक्वेस्ट करेगा कि डेट आए. हालेलुया. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज एक बार फिर से इस वचन के लिए जो भाई इज़ीकियल ने लेकर आया. वन ऑफ द थिंग्स जब हम देखते हैं यहाँ पर जो I will read a scripture which is found in 2 Chronicles chapter 25 verse 4 में यहाँ पर लिखा है, but he slew not the children, but did as it was written in the law of the book of Moses, where the Lord commanded, saying, the fathers shall not die for the children, neither shall the children die for their fathers, but every man shall die for his own sin. ये जो स्क्रिप्चर है रोमन्स की किताब में जो हम पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 में और रोमन्स 6:23 में, ये हमारे पाप के विषय में बताता है कि जो हम लोग पाप किया है और परमेश्वर से अलग हो गया है. So there was a big gulf. हम लोग परमेश्वर के पास नहीं जा सकते. In the Old Testament time जो था, if you wanted to go to the Lord, you could not just go to God just like that. You had to go to the priest or the high priest or the prophet. They will pray for you. God only spoke to people through prophets. And उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह आया इस दुनिया में, और वो जो बीच में जो हमारे जो एक गैप रहा है, जो हमें परमेश्वर से नहीं वो परमेश्वर से हमें नहीं मिला सकता था, वो हटा दिया ताकि हम परमेश्वर से मिल सके. प्रभु यीशु मसीह जैसे कहा कि I am the way, the truth and the life, no man comes out of the Father without me. I am the way. वो दरवाज़ा है, उसी के द्वारा जब हम प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण करते अपने जीवन में, तभी हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं. बिना प्रभु यीशु मसीह के हम नहीं जा सकते. तो प्रभु यीशु मसीह ये कैसा दरवाज़ा है? उसने इस दुनिया में आया, हमारे तरह जिया 33.5 years, and he died on that cross. He suffered for us. He died on that cross, and he did not stop there, but he rose up on the third day, and he is now seated in heaven. उसने जब क्रूस पर था, उसने कहा, it is finished. What was finished? The things that he came to do, जो हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए. So now, when you're looking at the scriptures, जो gap था, उसी तरह से जो लोग मर गए हैं, हमारा जो हम जीवित है, there is no physical nor spiritual connection. It is all gone. Yes, we have memories, right? But there is no spiritual, no physical connection. हम लोग उन लोग से बातचीत नहीं कर सकते. जो कहते हैं कि लोग, you know, that वो जो मर गया था वो आया, हमसे बातचीत किया है, हमारा सपना में आया है, and all those things, it doesn't happen. You know what? Satan is a master of disguise. Remember the Bible says कि God threw 1/3 of the angels and Satan into the earth. वो जो angels थे, 1/3 of the angels, और शैतान जो उन लोग के लीडर, वो लोग सब यहाँ पर है, इस दुनिया में धरती पर है.
And these are the ones that disguise themselves and come. जब हम लोग उनको invite करते हैं और like हम लोग सोचते हैं कि हमारे जो मर गए हैं वो हमसे बातचीत करते हैं. No, they are not. They have no authority to cross that line. They cannot. But these demons, they depict themselves, they disguise themselves, they transform themselves. If you go back into the book of Genesis, वहाँ पर कहता है कि the sons of God, they disguise themselves and they married the earthly people. वो अपने आप को disguise कर लिया और वो इंसान बना. The other thing it says, the angels, they are neither man or no woman, right? ये लोग, they do not have gender. They are angels basically. So these demons, they were angels in heaven. So now comes the thing. जब when they married humans, then the offsprings, it was changed basically. So now जब हम लोग देखता है कि जो लोग कहते हैं जो this Halloween thing, right? As believers in Christ, we have nothing to do with Halloween. We stay away from it, right? This is what I believe. This is what the Bible says. It doesn't say that there is a celebration of Halloween. You don't. No, it doesn't say. But जब हम लोग scriptures पढ़ते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि यही बात हम लोग के पर जो परमेश्वर का वचन है ये समझाता है. जैसे the other thing is कहते हैं कि like alcohol के बारे में. People say no, there's no way in the Bible it says that you should not drink alcohol. But what does alcohol do to you? Little by little, it destroys you. You start taking drugs, little by little, it destroys you. Sin comes in our lives and it starts to destroy you little by little. It takes you away from God. It comes to a point, if you do not correct it, you will die in sin and you will end up where that rich man ended up. There will be no connection between you and the living. You will never be able to come back and tell your families or friends or whoever that no, you should follow the other route. No, because God has given you the choice. जैसे मैंने ये scripture पढ़ा था, इसमें बताता है a father cannot die for his son, nor the son can die for his father. Right? Every person will die for their sins. Every person will have to pay the price for their sin. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. परमेश्वर का जो gift है वो eternal life है, अनंत जीवन है, वो परमेश्वर के साथ में, प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहने के. So it's a daily walk. John 3:16 हम लोग यही बात बताता है. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes on Him should not perish but have eternal life. वो अनंत जीवन हम लोग के तभी मिलता है जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं. वो दरवाज़ा को अपने जीवन में लेते हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं. आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए कि हमें सिखाया है कि हम इन सभी चीज़ों में ना फंसा रहे. ये हमें शैतान की ओर, नरक की ओर हमें लेकर जाएगा, लेकिन हम परमेश्वर के वचन में स्थिर रहे और हम लोग आगे बढ़ते रहे, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. और एक और गीत हम गाएंगे, उसके बाद हम अपना सभा खत्म करते हैं.
प्रभु यीशु मसीह के पास आए। अगर जो आप गलत रास्ते पे चलते थे तो क्यों नहीं प्रभु के पास आए और कहे कि प्रभु हमें स्वीकार कर ले, अपने राज में हमें स्वीकार कर ले, पश्चाताप कर ले, कहे कि प्रभु हमें माफ कर दो, हम तेरे ही रास्ते पर चलना चाहते हैं और तेरे संग रहना चाहते हैं। प्रभु आज हम यही प्रार्थना करते हर एक के लिए, अगर जो ये प्रार्थना आप कर रहे हैं तो प्रभु जरूर से तुम्हें माफ करेगा और स्वीकार करेगा अपने राज में, क्योंकि वो आपसे बेहद प्रेम करता है। उसने रास्ता बनाया है हमारे तुम्हारे लिए ताकि हम परमेश्वर के पास जा सके। हालेलुया, हालेलुया। We worship you, God Almighty. We thank you, Lord. As we sing this last verse again, sing it from your heart and ask the Lord to come into your life and cleanse you. स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरा मसीह। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए तू उधार दे दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए तू उधार दे दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास। Hallelujah, Jesus. We thank you, God Almighty. We thank you, Father. We thank you this afternoon, Lord, for loving us, O God Almighty, for being there for us, O God Almighty. We worship you, Lord. We give you all the glory and honor, God Almighty, for who you are, for what you have done for us, Lord, in our lives. And I thank you once again in Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you all. And we'll see you on Wednesday night for Wednesday worship. Actually, tonight on Radio Kushi and Asha at 7 p.m. God bless you all.